Hello and good evening to all. My name is Shalini and I welcome you all in this special virtual book launch event. मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस वर्चुअल बुक लॉन्च इवेंट में। फ्रेंड्स, एक खुशहाल लाइफ की ख्वाहिश हम सभी की होती है। अपनी लाइफ को हैप्पी कौन नहीं रखना चाहता। किसी को भगवान की, ईश्वर की भक्ति में खुशी मिलती है तो किसी को नींद में खुशी मिलती है, किसी को अपना काम करने में खुशी मिलती है तो किसी को आराम करने में मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सच्ची खुशी पाने के लिए हमें बाहर की दुनिया में भागने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह पर हमें सच्ची खुशी पाने के लिए अपने अंदर की दुनिया में झाँकने की ज़रूरत है। द ओनली वे आउट इज़ इन। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज हम जिस बुक को लॉन्च करने वाले हैं, वर्चुअली लॉन्च करने वाले हैं, उस बुक का टाइटल भी यही है, द ओनली वे आउट इज़ इन। अ नो नॉनसेंस गाइड टू क्रिएटिंग योर रियलिटी। और इस बुक की ऑथर है कोमल लूथरा। सो फ्रेंड्स, कोमल लूथरा से मैं आपको बहुत जल्द बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे इस बुक के बारे में डिस्कशन शुरू करें और इस बुक के सब्जेक्ट, इस बुक के मैसेज के बारे में हम उनसे बातचीत करें, मैं आपको उनका छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आप उनसे ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। शी इज़ अ content writer, brand and communications specialist. She believes in the untapped power that resides in human mind. So without any further delay, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी आज की गेस्ट ऑथर को, द ऑथर ऑफ द बुक को, कोमल लूथरा। Hi Komal, how are you? Komal, please unmute yourself. Oh, I'm so sorry. Hi, everyone. I'm doing well. Thank you so much. So Komal, first of all, welcome to this program and congratulations. हम आपकी बुक को आज virtually launch करने वाले हैं. So how are you feeling? Komal, can you hear me? Shalini, I lost you there. Your connection, I don't know. I think I lost you there. Okay, आपको मेरी आवाज आ रही है? Now I can hear you. Yes, the screen Okay. froze for a few So seconds. I was saying, I was congratulating you for this moment, for this event, and how are you feeling today? Excited for sure. This is my first book, so Yeah. definitely excited, happy. But more than anything, I'm grateful. I'm so grateful to be able to write and share this with the world. एग्जैक्टली हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली आपकी बुक का टाइटल ऐसा है जो कि हम सबसे कनेक्टेड है और इसके बारे में हम हमारी ऑडियंस जरूर जानना चाहेंगी। सो सबसे पहले तो कोमल, मैं जानना चाहती हूँ, हम जानना चाहते हैं आपके बारे में। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। Okay. Basically, I'm born and brought up in Delhi. I recently moved to Gurgaon. From the past 2 years, I'm living in Gurgaon, but originally I am from Delhi. I'm a content writer. Writing is, in my DNA. So even professionally, I write. And other than content writing, I'm into CSR work, that is corporate social responsibility. So, where you connect with a lot of NGOs and work towards the society. So, the social work sort of a thing professionally. And I also do brand management. I help creating brands to the organization. So basically, a brand and communications manager. That is ऑल my राइट। professional profile. ओके। सो आप राइटिंग आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, सो बुक्स की ओर भी आपका काफी इंटरेस्ट रहा होगा बचपन से ही। तो क्या बचपन से ही बुक पढ़ते आ रहे हो, मतलब आपको रीडिंग का भी शौक है? Always, I always loved to read. I have been an avid reader ever since I remember. But writing is a new thing. I started writing a couple of years ago, and we'll get into that later. Like as to how and why I thought of writing, but reading is something that I have always connected with. ऑल राइट। सो बुक लिखने के बारे में कब सोचा आपने? आई मीन आपकी राइटिंग जर्नी कैसे शुरू की आपने? किसने इंस्पायर किया बुक लिखने के लिए? थोड़ा सा बताइए प्लीज। Okay, actually, 3 years ago, as I told you, I love to read. So I was reading a lot of stuff, sometimes fiction, sometimes non-fiction, self-help kind of stuff. Everybody wants to improve the quality of their lives, right? So self-help books are really helpful in that. And I was reading quite a few. I guess 3 years ago, I came across a book, The Secret by Rhonda Byrne, and a friend recommended it to me, so I just जी। read it for the first time.
just to see what it has to offer. And when I read it for the first time, it felt like, whoa, I mean, that doesn't sound very real or very true. I mean, it felt like a hoax, something that, isn't very real. I thought of giving it a try, though. I'm somebody who likes to experiment. So I said to myself, what harm it could possibly cause if I tried implementing these principles in my life. And once I tried, experimenting, and then I tried reading more stuff about it, there was no looking back. Because then a lot of authors, a lot of celebrities, everywhere, when I started looking, I started attracting more and more stuff of the similar kind online, Okay. my personal life, everywhere. So I read a lot of books, and as I kept learning, it kept surprising me. I mean, every time, starting from something very small to something very big, whenever I was able to manifest something using the techniques that I learned, I had goosebumps. I mean, it was always like a new feeling, a Wow. very exciting feeling. And Yeah. that is when I decided that, the point of knowledge really is to share it. And it changed my life drastically. I mean, in the past 3 years, it changed my life drastically. So I just wanted to be able to share it with the world. And that is when I decided that I want to write about it. ओके, ओके। सो आपकी कैसी रही राइटिंग जर्नी? आई मीन आपकी फैमिली का सपोर्ट या फ्रेंड्स का सपोर्ट या उन्हें पता था कि आप बुक लिखने वाले हो? ऐसा कुछ था? Actually, yes, I told a few close people. अच्छा। Majorly, it was my husband who was always very supportive towards my writing because, when people start writing, initially I felt like this is so easy. I'm a content writer anyway. What is to stop me from writing a book? And that's going हुँ, to come हुँ। very simple. But the journey wasn't exactly like that. Because when I अच्छा। started writing, you get a writer's block time to time. There were times when I sat down with my laptop and for hours and hours I would not be able to write a single sentence. And there will be times when in a day I wrote 2 3 chapters. So it's very uncertain, and this journey, it kept me cranky at times. Sometimes I was happy, sometimes unsure. So yeah, basically my husband was the one who helped me through it all, and I was finally able to finish writing. अ, कोमल, फैमिली का सपोर्ट होता है तो हम जो ड्रीम देखते हैं या जो नया वर्क करने की कोशिश करते हैं उसमें इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है और वो काम उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। ये बात तो True, मानने I वाली है agree. कि हस्बैंड या फिर हमारे पेरेंट्स, यहाँ तक कि कभी-कभी बच्चे भी इतना सपोर्ट करते हैं कि हम उस काम को बहुत ईज़िली कर पाते हैं। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपका फैमिली का सपोर्ट अच्छा हो। सो Right. कोमल, आप कभी जब स्ट्रेस्ड होते हो, परेशान होते हो तो आप अपने आप को डी-स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हो? क्योंकि आपकी बुक का टॉपिक ऐसा है, मैं उसको उसकी एक्चुअल में थोड़ा फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप डिस्ट्रेस होने के लिए क्या करते हैं? There are only two things that I do. One is traveling, but that is not always an option. I really love going to the mountains, being in Yeah. nature. I feel like I'm able to connect, with the nature truly. I take a walk in the park and it feels like I'm smiling. Anything green I see, it makes me really happy, but that option is not always available. We have our Mhm. lives and jobs and other things to carry on with. So the other thing that I prefer to do is reading, for sure. Reading and meditation. So whenever everything is getting too much, sometimes burnouts are happening because of work, sometimes personal life, relationships. A lot of things can cause one to get distressed. So whenever I find myself in such a situation, I either read, I go into nature, or I meditate. One of these things, they always work. ऑलराइट। सो कोमल, आपने अपनी बुक में इनर पावर के बारे में बताया है कि जो हमारी इनर पावर है वो बहुत वर्क करती है, बहुत हेल्पफुल होती है हर चीज़ के लिए। सो ये इनर पावर क्या है हमारी और इसका रियलाइज़ेशन कैसे होगा? इसके बारे में प्लीज़ बताइए थोड़ा। Okay. See, basically, जो human mind है, there are two aspects to it. One is a conscious mind. Now, that is something that we use for our survival. हमारे basic जो senses हैं, sight, smell, touch, sound, taste, उन senses के through जो भी information हम perceive करते हैं, all that is coming through the conscious mind. So that is how we survive in the world, and it is of course very important, and everybody is aware of that part. But there is another layer which is underneath the conscious mind, and that is way more powerful than the conscious mind, which is our subconscious mind. Now, the subconscious mind is truly powerful, so powerful that it is actually creating
95% of our life. I mean, 5% times we are consciously doing things, but there are some 60, 70,000 thoughts that we get in a day, approximately. And there are so many things happening around us all the time. It is impossible to be consciously aware of everything. If I had to put it in layman terms, I mean, see, suppose even when we are asleep, the bodily Mhm. functions are happening, right? We are still breathing, and bodies digesting food, assimilation, all those things are still happening inside. Breath work is happening. So all that is the work of subconscious. We are not doing any of that consciously. So that is the subconscious mind, which everybody has, but not everybody is aware of how to consciously use it to your advantage. So that is what I have tried talking about in my book, where how you can reprogram this powerful entity to your advantage. Because whatever is happening in our life, our physical reality is directly linked to whatever our is being fed into the subconscious mind. So we can actually do it ourselves consciously. Instead of letting it control us, we can learn to control our mind, and then amazing things happen. So that's what I have written about. ऑलराइट, सो आपने बताया कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है बजाय इसके कि कॉन्शियस माइंड के, मतलब आई मीन 95% वर्क हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। थॉट्स Right. थॉट्स आती है कॉन्शियस माइंड में, बट सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहता है, वो ज़्यादा एक्टिवली काम करता है। सो इसकी Right. जो एक्टिवनेस है या इसकी जो पावर है, उसको हमें और यूज़ करना है या उसको बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Okay, I'll tell you. See, first of all, I want everybody to understand कि subconscious mind की जो power है वो existent है, सबके पास है और equal है. हमें उसे बढ़ाना या घटाना is not the point. The point is to be able to learn how to utilize it to your advantage. Now, what happens is when a child is born, from when a child is born till 8 years of age, we are basically downloading data. क्योंकि उस टाइम पर हमारे माइंड में कोई बिलीफ सिस्टम्स कुछ भी होता नहीं है. इट्स ऑल ब्लैंक, अ ब्लैंक शीट, राइट? सो देर आर 3 E's E that I talk about, which is entertainment, elderly and environment. इन 3 चीजों के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आता जाता है, वट एवर वी परसीव, वी क्रिएट बिलीफ सिस्टम्स यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन. उन बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ हार्ड ड्राइव. उसके अंदर वो सारा प्रोग्राम, वो सारा बिलीफ सिस्टम स्टोर हो गया है, एंड दैट इज हाउ वी परसीव द वर्ल्ड आफ्टर दैट. तो हम वही चीजें अट्रैक्ट करते जाते हैं. द एक्सपीरियंसेस दैट वी अट्रैक्ट, द सर्कमस्टांसेस दैट वी अट्रैक्ट इन आवर लाइफ इज ऑलवेज in accordance with our existence subconscious programs. तो वो जो programs हैं, sometimes they are helpful, sometimes they are not. And they are even provided by sometimes good intending adults, like हमारे जैसे parents हैं. There are a lot of things which are common for a lot of people, everybody can relate. जैसे हम सबने सुना है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, like everybody has that, right? Or life is hard, you have to struggle to succeed, hard work is necessary, or love hurts. These kind of basic things everybody knows. When all these things are in our mind, we perceive the world according to these belief systems. And whatever is our belief, हमें वही अपनी लाइफ में दिखाई देता है, वही हम अट्रैक्ट करते जाते हैं, सिमिलर चीजें. सपोज आई मीन, जस्ट फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड, सपोज अगर किसी के स्कूल में ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, एंड टीचर्स और पेरेंट्स केप्ट टेलिंग हिम और हर दैट you are never good at studies, so you will राइट। not be able to get a good job like that. So, now this is, I may not even remember it, but for the rest of my life, it is there in my mind that, okay, so because I was not good at school, I will not get a good job in future. So, जब भी मेरे interview में कोई rejection होगा, whenever I'll not be able to succeed in anything, this mind is not against us, but it is just a program, right? It is not consciously thinking. So, जैसे ही मैंने वो thought डाला कि मेरा rejection हो गया interview में, everything that is related to a rejection pops up. हमने देखा होगा हमारी लाइफ में, हम अक्सर नोटिस करते हैं कि कोई भी चीज जो अचानक से एक नेगेटिव थॉट आता है और उसके बाद नेगेटिव थॉट्स की पूरी चेन आती जाती आते है. जाते हैं, राइट, राइट। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है. एवरीबॉडी
रिजेक्ट्स मी, और आपको अपनी लाइफ की वो मेमोरीज याद आ जाएंगी जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था. पॉपुलर किड्स, दे यूज टू इग्नोर मी ऑल द टाइम, and now I'm still getting ignorance, I'm getting rejection. So basically this is how the subconscious is working. It is giving you all the information based on the frequency you are at currently. And the sad part is that everything we buy today, suppose television, washing machine, anything that you buy, even toys for kids, they come with a manual. It teaches you how to use the product. But Right, we right. have this super sophisticated technology available inside us, which is our mind. Nobody ever taught Exactly. us how to use it. क्लास Exactly. में अगर अच्छा नहीं करते थे तो टीचर्स ऑलवेज यूज टू से कि कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करो. Nobody ever taught us how to How concentrate. to, yeah, how to Yeah, concentrate. करना है, okay fine, but करना कैसे है? So this is a Right. very sophisticated piece of technology that we have available with us, but we just don't know how to use it. So that is where the reprogramming of this mind comes in picture, where you can use certain techniques which are obviously there in the book. So you can use those techniques to reprogram this mind to work in your favor. And when you are on those thoughts, you will attract thoughts of a similar frequency, because everything is energy and every thought is vibrating at a particular frequency. Right, So right. you want to attract good things, you will have good thoughts. You want to attract bad stuff, you will have bad thoughts. It is always relevant to each other, never the other way around. राइट. कोमल, आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई जब आपने बोला कि हमारे पास इतना सुपर पावरफुल टूल है जो भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हम उसको यूज करना नहीं जानते. उसको हम एक तरह से बॉडी में लेके और बस खाली घूम रहे हैं, कुछ उसका यूज नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमें करना चाहिए. जबकि एक छोटी से छोटी टॉय के लिए भी हमारे पास एक मैनुअल आता है जिसमें आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीजें बताई जाती है. सो फ्रेंड्स, माइंड हमारा इतना पावरफुल है. हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आपको सिर्फ इसकी बारीकियों को जानना है, इसका जो रियल पावर है उसको जानना है और फिर उसको यूज करना है. और जब आप इसको यूज करना सीख जाएंगे तब आप देखिएगा कि ये किस तरह से नए नए मिरेकल्स करता है. राइट कोमल, जैसा कि आपकी लाइफ में हुआ. Agreed. Yes, totally तो agree. कोमल, आपने जो टेक्निक्स बताई है, टिप्स बताई है, हम इस चीज से अग्री करते हैं. लेकिन मान लीजिए अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऊपर और हम फेल हो जाते हैं, तो हम इसका ब्लेम किस पे डालें? हम टेक्निक्स पे ब्लेम डालें या फिर अपनी कोशिशों पर ब्लेम डालें? क्या है रियलिटी? क्या सही है इस तरह से टेक्निक्स पर ब्लेम डालना? आपका क्या कहना है? Uh, See, okay. First of all, I want everybody to know that this technique that I'm talking about, it is essentially called as the law of attraction. And राइट. when I say law, a law by meaning is something that is not changeable, it is not adaptable, it cannot be influenced by the opinions. वो एक लॉ है. हम अचानक से एक दिन अगर हमें उठ के लगता है आज लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है, सो नो, इट्स गोना बी फनी, राइट? बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्किंग, यू बिलीव इट और राइट. नॉट, इट इज वर्किंग, राइट? So this is a law. It is definitely working. You do not have to necessarily consciously apply it. आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में वो काम कर रहा है. बट हमारा ह्यूमन माइंड इस तरीके से ट्रेन्ड है, वायर्ड है, दैट वी ऑलवेज वांट प्रूफ्स. तो हमें बेसिकली प्रूफ चाहिए ये जानने के लिए कि क्या ये काम करता है. नाउ देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. देयर आर सम पीपल जिनके लिए लोगों का, दूसरों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है. तो आप ऑनलाइन जाकर यू कैन सी ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड हु आर फॉलोइंग दिस लॉ. लॉट ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, लॉट ऑफ साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस. आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिन लोगों के लिए ये लॉ काम किया है. एंड फॉर सम पीपल दे विल अंडरस्टैंड इट देन, बिकॉज ऐसा होता है ना कि अच्छा, अगर कुछ सक्सेसफुल लोग हैं जो कह रहे हैं कि काम करता है तो करता ही होगा, दैट काइंड ऑफ माइंडसेट इज देयर. राइट. बट देयर इज अनदर वे विच आई रिकमेंड, बिकॉज आई एम वन ऑफ द स्केप्टिक्स. जब तक मैं खुद अप्लाई करके नहीं देखूंगी, आई एम नॉट गोना बिलीव इट. आई एम नॉट बिलीविंग इट जस्ट बिकॉज एनीबडी इज सेइंग इट. सो ट्रू, ट्रू. you can try to apply it in your own life. आप उसको कोशिश करके देखो कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. एंड व्हाट यू कैन डू इज, एज अ प्रूफ, यू कैन ट्राई थिंकिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ, कि आपकी पास्ट लाइफ में जितनी भी चीजें हुई हैं, अच्छी या बुरी, वर यू एवर थिंकिंग अबाउट देम बिफोर दे हैपेंड? You will get the answers. Just have a conversation with yourself. Everything that has ever happened in your life, did you ever think about it before it happened? You'll have the answers. So
For most people it actually works when they consciously try it, but जब work नहीं करता है, maximum times उसका reason ये होता है कि हम see, there are three important elements to it. Concise choice of positive words. जो आप बोल रहे हो, जो आप बात कर रहे हो, that has to be positive. Second is clear visualization. Visualization is very powerful. The details are in the book, but right now I'm telling you just on a larger scale. So you visualize, and the third part is corresponding feeling. You have to feel like you have it already. You have to feel in the state of being that desire that you are trying to manifest. So normally क्या होता है, हम positive words बोल देते हैं. Speaking affirmations is an easy thing to do, right? हम्म। Visualization, it is easy for some, it is not easy for others, but most people are able to do it. Problem आती है third वाले part में, which is the feeling component of it, which is actually very important. अब मैं ऊपर से बोल रही हूँ because मुझे पता है मुझे affirm करना है, so I'm saying I am successful. I'm repeating it like 20 times a day. But at the same time, आई एम नॉट एबल टू फील इट. अंदर से मुझे फीलिंग वही आ रही है कि अरे यार, देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम नॉट एबल टू अचीव. होगा या नहीं होगा, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, किसी और इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, एंड विल दिस टेक्निक इवन वर्क. सो देर इज अ डाउट इन माई माइंड. सो जब मैं अपने कॉन्शियस माइंड में ये सब अफर्म कर रही हूँ और रीप्रोग्राम करने के लिए सबकॉन्शियस को भेज रही हूँ, सो द सबकॉन्शियस इज गोना रिजेक्ट दिस एफर्मेशन because राइट। it will say that this is not helpful. ये तो आप झूठ बोल रहे हो. द सबकॉन्शियस माइंड इज गोना रिजेक्ट द इंफॉर्मेशन बिकॉज जो मेरे वर्ड्स हैं वो मेरी फीलिंग को मैच नहीं कर रहे हैं. सो यू राइट। हैव टू, there is a lot to explore. I personally have been using these techniques for the last 3 years. There are a lot of things that I have been able to manifest, but there is still a lot that I was not able to. It is a learning process, but once you start doing it, you will not need any proofs because you will have the proofs for yourself. You will be able to see it by yourself कि काम कर रहा है. So you don't have to believe anyone, not me, not anyone. Just try it for yourself. There is no harm in applying some harmless techniques. वाओ! कोमल, बहुत ही सही बात आपने एक बताई कि आपकी फीलिंग्स और आपके वर्ड्स ये मैच होने ज़रूरी है। आप सोच कुछ और रहे हैं और फिर उसके बाद में आप अपने जो अफ़र्मेशंस है वो आपकी अलग चल रही हैं और साइड बाय साइड बैकग्राउंड में आपकी फीलिंग्स अलग चल रही हैं। सो इसमें ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी यूज़ करते हैं और सभी कहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाता है और जब आप यूज़ करते हैं तो ही नहीं होता, तो इसमें ये जो रीज़न है वो प्रोसेस में कहीं न कहीं आप कोई फ़ॉल्ट है, कोई आप गलती कर रहे हैं। तो अपनी वर्ड्स को, अपनी फीलिंग्स को आप मैच करवाइए। इसमें ज़रूर आई थिंक कोमल थोड़ा-सा टाइम लग सकता है क्योंकि एक बिगिनर के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह से चीज़ों को साथ में बैठाना। तो शुरू में Hmm. प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको देगा। कोमल, मैं अपने Exactly. फ्रेंड्स को, अपनी ऑडियंस को, व्यूअर्स को मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि आज हम एक बुक को वर्चुअली लॉन्च कर रहे हैं और ये बुक रिलेटेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इनर पावर से, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, इन सभी टॉपिक्स को लिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। कोमल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, इस बुक की ऑथर हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो ज़रूर कोमल को बहुत खुशी होगी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए। तो आप चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और अपने जो क्वेश्चंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चंस के साथ-साथ में अगर आपको कुछ और कमेंट करना है या हमारे साथ कुछ मैसेज शेयर करना है, अपने इस प्रोग्राम को लेकर कुछ व्यूज़ शेयर करने हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोमल, एक फ्रेंड का हमारे साथ आपको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं एक बार उनके नाम ले देती हूँ। सो एक Sure. फ्रेंड है, ही इज सेइंग सुपर माइंड ब्लोइंग नॉलेज। सुभाष आर्य इज सेइंग यू आर सो इंस्पायरिंग। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ज्वाइन करने के लिए और इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। एक फ्रेंड है जो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं वो क्वेश्चन पिक कर लेती हूँ। Yes, please. रैंक Please go बाय ahead. सीईओ नाम से एक है, ही इज आस्किंग वेयर डू यू गेट सच गुड आइडियाज फ्रॉम। सो आपको इस इस बुक के लिए इतने अच्छे आइडियाज कहाँ से मिले? कोमल, इसका आंसर दीजिए प्लीज। Okay, first of all, thanks to everyone who's congratulating. Thank you for calling me inspiring. I really take it as an honor. And यू answering आर the question, thank you so much. Answering the question, see, the ideas are always, there is only one way that has been there for me. It is always in the books. I think books, I consider them to be my best friend.
best friends, and I have a huge, bookshelf in my house bigger than my television because I Wow. really like to read Nice. a lot. So self-help books, I think, are the way for getting these ideas. And once you start implementing, you just start learning. So that's all I want to say. That read, 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 read. I'm not saying that necessarily read my book. Yeah, you can also do that. I'll be happy about it. But yeah, just keep reading and For you will sure. keep getting ideas. जी। कोमल, इस बुक के लिए आपको कितना रिसर्च वर्क करना पड़ा? कहाँ से कुछ रिसर्च वर्क किया आपने, हेल्प ली? Actually, yes. This is funny that I thought that I, wanted to write a very small book. That was my, mindset initially because, see, not everybody is an avid reader. I was an avid reader, but not everybody likes to read. But this is not a novel. This is not fiction. It is something. It is the information that I wanted to spread, uh, everywhere. And my mindset was that even if one person, a single individual, is able to utilize the techniques outlined in the book, and if they are able to make some positive changes to their lives, I will consider it success. So I thought that, instead of writing way too much, I will rather write a small book, something which will be very crisp, very precise. It will give you the ideas that you want, and you will not have to read a lot for people who are not really, readers. So I started thinking that okay, it's a small book, it shouldn't take a lot of time. I only sat down to write 8 to 9 times, but surprisingly, those 8 to 9 times were spread across a time of a year and a half because I wanted to write only what I truly believe in. I have read a lot of books about this topic, Shalini. I have, done a lot of experimentation, but I was Mhm. not willing to write anything and everything that I know and I have read about. I wanted to write what I have personally experimented and something Exactly. that worked for myself. Yeah. So, for being able to reach that stage, I kept reading, I kept learning, and then I kept experimenting. Something works, something doesn't work. So, this entire process took like a year and a half. I sat down to write specifically only 9 to 10 times, but yeah, across a period of a year and a half. या कोमल, सो इतना रिसर्च वर्क करने के बाद में आई है एज अ रिजल्ट कि ये बुक सबको पसंद आ रही है, आई एम श्योर। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देती हूँ कि ये बुक अभी रिसेंटली बेस्ट सेलर भी बनी है। सो कोमल, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि अमेजोन पर ये बुक Thank बेस्ट you. सेलर बन चुकी है। तो अब इस बुक के बारे में अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, इस बुक के बारे में और बताने की वाली बात नहीं है। ये बुक बहुत ही आपकी इनर पावर को लेकर, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लेकर की बहुत पावरफुल बुक है। सो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए और अपने रिव्यूज देना, राइट कोमल? रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा Yes, फ्रेंड्स। I ये बुक really पढ़िए want और रिव्यूज feedback. दीजिए। या सो कोमल, जैसा आप बता रहे हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर आप अपनी फीलिंग्स और अपने वर्ड्स को मैच करते हुए अगर आप बैठते हैं तो। सो आपके साथ, मतलब आपका मैं जानना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में पर्सनली कुछ ऐसा आपने अट्रैक्ट किया हो इस पावर के थ्रू, इस अट्रैक्शन के थ्रू, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो? कुछ ऐसा मिरेकल हुआ आपकी लाइफ में भी? Hmm. Honestly, I by now, like after 2-3 years of constantly applying all the principles that I have learned, I am a powerful manifester. I usually am able to attract things I like, but keeping a lot of those things private, I will share just one thing with you. या। This very house that I'm sitting in right now. So before I read, learned these techniques, and before I did any of that, I was living in a small rented property. Uh, like 2 years ago, I moved here about 2 years ago. So that is after 1 year of what when I started manifesting. I was using visualization and scripting. These two techniques I was using that time, and I wrote all about the dream house that I wanted to move in my journal. So I have this journal where I wrote all about it, and at that time I had no idea, or there was no possibility of being able to buy a house that time. When I started writing, it was just pure somewhere in the air. And when it actually happened, just within a year, when it actually happened, the house was exactly the way I had written about it, exactly वाओ! and precisely. In fact, this is a fun thing that I always like to tell my close ones also,
When I was writing it in my journal back in 2020, I wrote that I want to attract my dream home. And I wrote that, this is how it's gonna be. So I wrote everything about it. And when I moved here, I realized that even the name of the building is Dream Homes. I mean, Oh my God. it was totally like, unpredictable. And that time while buying the property, we didn't even realize it. It occurred to me like many months after moving here that, this is exactly what I tried manifesting. The way I had written about it, the name, how spacious it should be, how organized it should be, what kind of interiors should be there. I had written everything and it happened. And when it was happening, I didn't even realize it. I realized it way longer, maybe a few months later. At least a few months later, when I sat down and I read my diary again, and then I realized, oh my God. And since then till now, every time I manifest anything small to big, this is always the same feeling. I mean, I always get goosebumps. Oh my God, it is working. So yeah, that is how excited I still get. या कोमल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने जिस तरह का ड्रीम होम चाहा था, जिस तरह का आपने मैनिफेस्ट किया था, वो आपको मिल गया। सो इट्स रियली नाइस फीलिंग आल्सो कि जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। सो कोमल, आपकी बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है, तो रीडर्स का कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? कोई एक फीडबैक हमारे साथ आप शेयर करें? Abhi tak, I have gotten a lot of feedback, especially from my leaders at work. They are appreciative. It is so inspiring that, when I look at it now, I realize there is so much love in the world. Everybody is shouting at me. Everybody is happy. They have just nothing but good things to say about it. One of them that I want to share with you. So my last boss, the lady I was working with, a very strong personality that I really take inspiration from, my ex boss, Jennifer. I was a content writer under her a few years ago. And she always used to tell me that, Komal, don't write essays. I know that you love to write, but not everybody loves to read. So, I was doing the official content writing that time. And she was like, Mhm. write less, make it crisp. So that, millennials are able to relate it to it. And when I finished my first book and she bought it and she read it, and she gave me her feedback and she was so happy, and then she told me that, I am really happy. I love it that it is crisp and it is meant for the millennials, and you have not written something which is too much to read for a lot of people. So that was one of the feedbacks I really love. Mostly I've been hearing good things and I'm really happy about it. या कोमल, आपकी बुक का जो एक्साइटमेंट है, जो हैप्पीनेस है, वो आपके फेस से साफ झलक रही है और हम तक पूरी तरह से कनेक्ट हो पा रही है, रियली। सो Thank you so much. तो कोमल, अब इस बुक के बाद में और क्या प्लान्स है आपके? फ्यूचर प्लान्स क्या है राइटिंग को लेकर के? क्या इसका सीक्वल्स ला रहे हैं आप, या फिर Um, फिक्शन के अंदर ट्राई करना चाहे तो? ऐसा कुछ सोचा है? Actually, I'm not a fictional writer. I think it will always be self help, but I really wish to continue writing. I want to share something with you. Initially, this was supposed to be a two-part book. I wanted to write about the mind, the scientific aspect of it, how the mind works and everything. And I also wanted to write about the spiritual aspect of it, because both the things are actually very connected to each other. But then I राइट। realized that these are two topics that I do not want to merge. I want to write them separately, because there's a very different audience that believes in, spirituality, and a very different audience एग्जैक्टली। that obviously believes in the powers of the mind. So I decided against it, and I only went with this one part, which is logical, for people who follow logic, who want to see results. So that is what I kept in mind while writing this book. But my next book that I am intending to write will be based on the second aspect of it, which is very similar but more on spiritual lines. So that will be the second one. ऑलराइट। सो कोमल, आपकी इस बुक को अगर आज हम परचेज करना चाहें, हमारी ऑडियंस में से कोई परचेज करना चाहे, तो क्या कोई डिस्काउंट आज मिल सकता है हमें इस बुक पर? अगर आप कुछ अनाउंस Uh, करना चाहें तो? Yes, for the next 24 hours, if you try to buy the book, you go on Amazon, you will be able to see a 15% discount to its original pricing. So for the next 24 hours, there's a discount. But trust me, I mean, 24 hours, you buy it in the discounted period, or even if you buy it later, you will realize that it is totally worth your time and money. या
सो फ्रेंड्स, जैसा कि कोमल ने बताया कि इनकी बुक पर 15% का ये डिस्काउंट बता रहे हैं एमआरपी पर। सो आप अमेजोन पर इस बुक को परचेज कर सकते हैं, इस बुक को ऑर्डर कीजिए और इसकी फिजिकल कॉपी परचेज कीजिए 15% के डिस्काउंट पर। और इस बुक को खुद पढ़िए, फैमिली को पढ़ाइए, क्योंकि ये बुक हम सभी की लाइफ से कनेक्टेड है। इसका टॉपिक ऐसा है कि जो हम सभी रियलाइज करना चाहते हैं, इस चीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में इसको लेके आइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। कोमल, अगर हम आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या कोई कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकती हैं? हमारी ऑडियंस अगर आपसे बात करना चाहे तो एनी कांटेक्ट डिटेल्स? Sure. I'm there on Facebook, LinkedIn, Instagram. You can find me on Instagram. It's Komal Unapologetic Luthra. It's there on the screen right now. And you can also find me on LinkedIn and Facebook, or just ping me if you need any help as to if you want me to help devise a specific manifestation plan for your desire. What kind of techniques that should work for you specifically. I will be happy to help with that. या सो फ्रेंड्स, अगर आप कोमल से बात करना चाहते हैं, इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की कोई इनसे क्वेश्चन के आंसर्स लेना चाहते हैं, तो आप इनकी कांटेक्ट डिटेल्स आपके सामने है स्क्रीन पर, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोमल, एनी लास्ट मैसेज फॉर आवर ऑडियंस? Just that, stay grateful. I think I keep saying it to everyone, and it is there on most of my handles as well. Gratitude is the greatest multiplier. So, while there are too many techniques to learn, too many things to do, there is one thing that you can start doing right now, which is being grateful for what you currently have. So, the moment you start being grateful for anything that you have in life, it will just multiply like anything. So, just stay grateful. या सो फ्रेंड्स, जैसा कि कोमल ने बताया कि स्टे ग्रेटफुल, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल रहिए आप, और हमेशा दूसरों की हेल्प कीजिए, काइंड रहिए। आपकी लाइफ में ये जो पॉजिटिविटी है वो अपने आप ही अट्रैक्ट होती जाएगी। सो कोमल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम में आने के लिए, और इस बुक को लॉन्च करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। Thank you so much, Shalini. Thank you. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ऑथर ऑफ द बुक, जिनकी बुक को हमने वर्चुअली लॉन्च किया, कोमल लूथरा, जिनकी बुक थी सबकॉन्शियस माइंड लॉ एंड इनर पावर पर। इसी तरह की और बुक्स के साथ और बुक्स को लॉन्च करने के लिए हम ज़रूर यहाँ आएंगे, इस चैनल पर आएंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून, एंड टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।